Hey viewers, you're watching The Savera and I'm Vidhi Joshi. In the wake of the controversy surrounding RJD leader Tejashwi Yadav allegedly possessing two epic numbers, Bihar's Deputy Chief Minister Vijay Kumar Sinha has now come under similar scrutiny. The Bihar unit of the Congress party has accused Sinha of holding two separate voter ID cards, each registered in a different assembly constituency, Lakhisarai and Bankipur in Patna. According to the Congress, this discrepancy has emerged in the draft electoral rolls issued after the 2025 Special Intensive Revision conducted by the Election Commission of India. The Congress party has publicly alleged that Sinha filed SIR forms at both locations, leading to his name being listed in the voter draft rolls of both Lakhisarai and Bankipur. In Lakhisarai, his voter card bears the epic number IAF 39393370. His age is listed as 57, and his father's name is recorded as the late Sharda Raman Singh. This entry appears of serial number 274 in the draft list. Meanwhile, in the Bankipur Assembly constituency of Patna, another voter ID card under the name Vijay Kumar Sinha shows his age as 60 with the same father's name. The card carries the epic number AFS08 53341 and is listed at serial number 767. Taking to social media platform X, the Bihar Congress lashed out, calling Vijay Sinha the biggest fraud and questioned how the Deputy Chief Minister could simultaneously be a voter in two separate constituencies. They also revived Congress leader Rahul Gandhi's allegation of collusion between the Bharatiya Janata Party and the Election Commission, insinuating that such irregularities in the voter list point to a deeper institutional compromise. Adding fuel to the controversy, RJD leader and former Deputy Chief Minister Tejashwi Yadav held a press conference where he launched a scathing attack on both Election Commission and the BJP. Yadav claimed that the fraud was evident not just in print but was also visible on the Election Commission's own official website and mobile application. He cited booth-wise and serial number-wise details from both Lakhisarai and Patna's Bankipur constituency to assert his claim. In Bankipur, Sinha is allegedly listed at booth number 405 with serial number 757 and epic number AFS08 53341. Whereas in Lakhisarai, he is listed at booth number 231, serial number 274 with epic number IAF 39393337. He highlighted the inconsistency in Sinha's age, listed as 57 in one constituency and 60 in other, as for the proof of electoral manipulation. Tejashwi Yadav also pointed out that while he himself was served a notice by the Election Commission over a similar allegation, he had already responded to it via speed post on August 8. He questioned why no such notice had been issued to Vijay Sinha so far, despite the visible discrepancies being present in the official draft rolls shared with all political parties during the SIR process. He added that he would take the matter to court with full evidence and said that the situation left only two possibilities: either the special intensive revision conducted by the Election Commission is itself fraudulent or the Deputy Chief Minister is guilty of fraud. The RJD leader went further, suggesting that the entire voter revision process in Bihar was questionable. He said this wasn't merely a technical error or clerical oversight, but a serious violation of democratic principles. He pointed to additional anomalies in the voter list, claiming discrepancies in the names of family members, including parents and siblings, which raises further question about the accuracy and integrity of the revised rolls. Yadav concluded by asserting that such irregularities are unacceptable in a democracy and demanded a transparent and unbiased probe into the allegations against Vijay Kumar Sinha. He also warned that if the Election Commission fails to act decisively and impartially, it risks losing public trust and legitimacy. As the controversy intensifies, all the eyes are now on the Election Commission and the legal proceedings that may follow. मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारा बांकीपुर में पूरे परिवार का नाम था। पटना में जब कदम कुआं में रहते थे, हम अप्रैल 2024 में अपना नाम लखीसराय विधानसभा में जोड़ने के लिए वहाँ पर फॉर्म भरा और यहाँ पर
विलोपित करने का भी फॉर्म हम भरा था। उसी समय उसका ये कागज है। 24 में हमने लखीसराय में नाम जुड़वाने का फॉर्म भरा और विलोपित का फॉर्म उसी समय भरा गया, जिसका ये कागज है। किसी कारण से नाम नहीं हटा। फिर जब प्रारूप प्रकाशन हुआ तो हमारे परिवार के लोग बताए कि आपका नाम यहाँ भी है। तो हमने बीएलओ को बुला करके स्वयं फॉर्म भर करके और उनसे रिसीविंग भी लिया है। ये रिसीविंग है। अब ये जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव जी जिस तरह से फ्रॉडिज्म की राजनीति आप करके लोगों को बरगलाते हैं, मेरे पास ये दोनों है। मैं उस समय भी रिजेक्ट, ये विलोपित का उस समय भी हमने फॉर्म भरा था, ये रिजेक्ट हुआ। और जब ये नाम प्रारूप में आया तो फिर हमने ये बीएलओ को स्वयं भर के दिया। और मैं बता दूं कि मैं एक ही जगह से वोटिंग करता हूं। पिछले बार भी मैंने सिर्फ लखीसराय में किया है और लखीसराय में ही इस बार हमने प्रारूप भी भरा है। इस तरह का खेल हम लोग नहीं खेलते हैं। बरगलाने का, संवैधानिक संस्था को कलंकित करने का और अपनी खामी और कमजोरी को दूसरे के मत्थे उछाल कर अपने कमी को बचाने का खेल कतई नहीं होना चाहिए। ये आपके सामने है। मेरा दोनों फॉर्म उस समय भी हमने विलोपित का दिया था, नहीं हुआ। आज पुनः हमने दे चुके हैं। क्या तारीख को ये दिया गया है? ये हमारा, ये आप देख लीजिए, ये 5 तारीख को ही दिया हुआ है। और ये वाला है 30/4 को। विलोपित का कब डाले थे? 5/8। ये प्रारूप प्रकाशन के बाद हमने दिया। जब नाम देखा कि यहाँ भी है वहाँ भी है, हमारे परिवार के अन्य सदस्यों का नाम था, उन्होंने ही बताया कि आपका नाम हटा नहीं है। तो हमने यहाँ भी बीएलओ को स्वयं फॉर्म भर करके हमने दिया है। उसका रिसीविंग मेरे पास है। और उस समय भी हमने ये भर करके दिया था 30/4/24 को। ये रिजेक्ट हो गया था, अब किस कारण से हुआ, लेकिन दोनों फॉर्म मेरे पास है। और दुखद है कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अपने भाषा से किस तरह से कलंकित करते हैं और राजनीति को लज्जित करते हैं, ये उनको शोभा नहीं देता है। पूरी तथ्य की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। हल्केपन की राजनीति से राजनीति की विश्वसनीयता को ये लोग घटा देते हैं। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। That's all for now. Stay tuned to the Savera for more updates. Do like, comment and subscribe to the channel.